कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल्स सिंप्लीफाइड. Today we are going to start a new series. The name of the series is What It Takes to Be a Topper, Insights and Advices from the Toppers. In this series we are going to invite toppers from Jammu and Kashmir Public Service Commission Combined Competitive Examinations and also from other states also, and occasionally we can also invite people or toppers from UPSC. Today we have a very special guest with us. She secured rank 45 in Jammu and Kashmir Combined Competitive Examinations, also known as KAS examination 2022. She hails from a small village in Tahsil Patan district Baramulla. The name of the village is Warpura. She did her initial schooling from her own village only. Later she did BA LLB from Kashmir University. She has been working with Rural Development Department as a Panchayat Accountant Assistant before clearing this examination. Today we have with us Tabassum Farooq. Hello ma'am. How are you? Yeah, I'm good, ma'am. So, ma'am, tell us something about your journey from being an aspirant to an officer. I believe I'm still not an officer, but I think I'm still an aspirant. And the journey has been a beautiful one. Good struggles भी थी. There was a fair share of struggles, and there were learnings as well. Overall, the journey has been satisfactory. Okay, a lot of aspirants have been asking the same question. What do those who get selected do different from them? I think it is the consistency, the will to never give up, that differentiates the toppers or the qualifiers from the aspirants. There is nothing else. We need to trust our dreams, and I think destiny will play its role ultimately. Okay. It's So only sheer hard work plus some luck factor in it. I think it was some 2 years back, and in January of 2023, this year, when I missed the selection by 5-6 points, then I got the realization that this thing is not unachievable. If I work on my limitations, and I had done certain mistakes, which when I analyzed my marks card and other things, I got to know that I was not focusing enough on answer writing. So I worked on these things plus on GS4, that is ethics paper, and I think it did wonders to my scorecard this time. Okay, so we'll be waiting for the scorecard once PSC will release it. So one thing you mentioned that was answer writing. So we'll go like subject wise. A lot of aspirants are talking about what should we do for essay. So let's start from essay. How should aspirants approach essay paper? I think anyone who is studying for KS or IS for 2+ years, he must be knowing this, that there is no separate study that you need to do for essay. Your GS4 papers prepare you enough for the essay. One thing that we need to do in essay paper is practice writing. And there is a certain format to an essay, which everybody knows, that I will repeat it again. First one is the introduction, and then there is main body, and then there is conclusion. And I believe the essay should be of such a type, or you have to write it in a way that it attracts the interest of the evaluator. You have to start your introduction, you have to introduce your essay in an interesting way, and you have to conclude it in an interesting way. As someone said, that your essay should be of that level that the evaluator discuss it with his or her family at dinner time. So you have to work for that level in essays. Plus, what really helped me in getting a good score in essays, which was evident from my previous scorecards, was that I used to study the previous toppers essay scripts, which is available on Vision IAS website as well, and other coaching centers are also doing that. So we need to study them. And one thing that we will realize, that there is nothing extraordinary that I have written in that essay. The only thing that differentiates is
is that they have some sort of magic in their words, and the way they convey the message, and the way they weave magic with their words. We have to work on that only. Absolutely. That's the So tip for essay. yeah. So one thing, like a lot of aspirants I also met, they say that they wrote a very beautiful essay, but then Hmm. after some time they realize that they have given a lot of information, like factual things, like too many Yes. facts. Let's take an example. If an essay has come on woman empowerment, then they have given so many Yes. reports, commissions, like even the data also, like women are missing from this state, that state, so many things they have given. So do you think that Yes. these things sometimes backfire for the aspirants, and how far is that anecdote part important in essay? Yes. One thing I would like to add here, that our essay should be like a fruit salad. It needs ingredients, but you cannot add up one fruit at the cost Mhm. of another one. At the end of the day, we have these 1200 words, or a limited time, and a limited words that we have to put up our essay in. And we have to see whether we cannot quote all the reports, we cannot quote all the data and other things. We have to be balanced. We have to adopt a balanced approach in our essay. There should be reports, there should be statistics, there should be some stories, there should be some anecdotes, there should be other things as well, our opinions, there should be pros and cons of this very topic, and there should be beautiful conclusion. We have to end it on a positive note. That's it. We have to be balanced in our essay. We cannot only give reports and other things, because at the end of the day we know it's boring, and it's Mhm. boring True. to the evaluator as well. He does not want True. all these reports and these things. He needs a balanced kind of thing in these pages. So we have to pity the evaluator as well. We have to give him something he would relish Yeah. having. Yes. Yes. So that's True. it for essay. True. So now coming to like GS paper one, because right now our Jammu and Kashmir Public Service Commission has declared the preliminary result. Now aspirants are preparing for the main examination. So there are a lot of aspirants who have called me, messaged me. They are saying like, look, they got into the main examination somewhere, somehow, but they don't know even the syllabus of GS paper one, two, three, four. So to the young aspirants, what should they do now? Mhm. First of all, as we all know, I guess everybody knows this, but very few people act on this. That we have two guides in this journey. The first one is the syllabus, and second is the question papers. First of all, they have to download the syllabus, they have to keep a hard copy of it, and they have to keep studying it. In a way, I can say that they have to learn the syllabus by heart. Hmm. And second thing is that they have to study. There is no way out. They have to study the last year previous year question papers of UPSC as well as JKPSC. In this way, they will get a hold of what things are important, what elements are more important in the syllabus, and there are few elements from which we have seen very less questions from previous Hmm. years. So they will get prepared to focus on the syllabus. Okay, like I can say in ancient history, Hmm. there is a topic of religions. So there are various religions, but a religion like Buddhism, various questions are asked from that. So you have to study each and every religion, but you have to give extra focus on Buddhism. That's it. They have to see what topics are being repeated by the commission, and what topics they have to just skim through. That's it for GS1, 2, and 3. And for GS4, they have to make some special efforts. The efforts are less, but they should be focused on GS4. Because GS4 ka yeah, that we have to put less input and it gives us more output. As we know, who have been in the journey for 4 or 5 years, they are well aware of it. And there is another technique that we say that GS is a game of GS no, mains is a game of E2 plus O2. That is essays, essay paper, ethics paper, and optional 1 and 2 papers. If you have if you have mastery over these 4 papers, you are going to go to the mains. GS 1, 2, 3, there you have to work very hard, and the output is not that much. But if you give extra efforts in essays, in ethics paper,
in optional 1 and optional 2, you are going to the mains. There is no doubt in it. Okay. So, ma'am, you So in said 8 like, papers, and hmm, जी yes, जी you were saying that E2 plus O2, ethics plus essay yes plus optional two papers. So again, the yes. moot question remains like, what optionals should a student choose? Is it like that you have done your LLB, or I have done like my master's in business? Should I go with business, or should I choose some option which has a good score, which has a good reputation of passing in the examination or getting good marks? There are several factors to it in choosing a good optional. I would say there is no good or bad optional. There was a theory that people with anthropology, they go through the mains, they are the, it's Kashmir Anthropology Service and all those Mhm. things. But the fact is that when you are starting this journey and you have to choose optional, you it will take you 5-10 days, and you have to give it that time. You have to think about it because each aspirant is different. Like I would say, Urdu worked for me. I had studied law for 5 years. I did my 12, 10 plus 2, and after that I studied nothing. I had studied law for 5 years. I had not studied Urdu or public administration or any other subject. So for me, it was convenient choice to go for law. But when I saw the track record of selections from law optional, there were minimal selections Mhm. from law. So ultimately, I went with Urdu. I thought I think it worked for me, and for other aspirants, I would also suggest that they should first of all zero in 2 or 3 optionals, whatever their anthropology, public administration, Urdu, or whatever they have masters in or they have graduated in those subjects. And then after that, they should study the syllabus. They should go through the syllabus that the Public Service Commission issues of these subjects. After that, I think they would be able to cut down 2 or 3 optionals, and they would be left with 2 or 3 optionals. Then they should go through the syllabus, through the recommended book list of that. It's not necessary to study one book, or they can just study 2 or 3 pages of each recommended book. After that, I think they would be in a position to decide better for them. So if they are investing some 5 or 10 days or in 15 days in this process, it's worth it at the end. Because we have seen aspirants who are appearing at a particular optional for 2, 3, or even 4 attempts, and at the end of the day, they are like, "Ki, optional se maat kha gaye hum. Optional should have been different," and then they are in a situation that they cannot choose another optional because they have a less time left to prepare another option. So it's better to give it time initially, 15 or 20 days, that will be okay. तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही बोलते हैं कि एक जो ऑफिसर का जो डिसीजन उसको दूसरे बच्चों से अलग बनाता है वो यही होता है कि उसने कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन पहले ही लिया होता है कि ऑप्शनल चूज करते वक्त कि वो शायद वो बीड जी भेड़ चाल के साथ नहीं गया होता है कि वाई एवरीबडी इज गोइंग कि मुझे वो फैंसी वाले ऑप्शनल चाहे, तो उसने शायद कहीं ना कोई यूनिक ऑप्शनल लिया होगा, सिक्योरिंग वाला होगा, एंड ही और शी हैड अल्टीमेटली सी हर नेम इन द लिस्ट. See, I think everybody has two ways of learning. One is by experience, and another is by taking advices from others. But not from others, from any person, from the experts themselves. I got the True. experience that way. I went with public administration and Urdu, and then with public administration, then I opted for Urdu finally because maybe somewhere I did not got any advice from any expert that what option should I go with. So I learned it the hard way. So now aspirants can they can take my advice, or maybe they would get the experience. God forbid they don't get that, at least they listen to you so that उनका जो जर्नी है वो कहीं It's ना कहीं a स्मूथ it's हो a जाए. God, it's a journey of learning. We have to learn it either easy way or hard way. We have to learn it. yes, absolutely. तो हम GS1 की बात कर रहे थे, लाइक इन द GS1 वी टॉक्ड अबाउट लाइक एंशिएंट हिस्ट्री की आपने बात की कि बुद्धिज्म पे बहुत फोकस होना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग में. अब सवाल पैदा होता है कि देयर आर नाउ लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर्स आस्किंग फॉर दोज मेंस टेस्ट सीरीज एंड ऑल, and the evaluators are also delegating that process to someone else. Like in this Delhi circles we have this thing like a particular coaching center will give you
40 rupees for per answer evaluation. Now a particular person who is getting those questions is delegating to some other aspirant. Look, आप ये evaluate करके दे दो मुझे, मैं आपको 30 रुपया देता हूँ. But again, the evaluator should be someone जिसका at least ample knowledge हो, expertise हो, ताकि बच्चे को ultimately वो धोखा ना हो जाए. So आपने जो आंसर राइटिंग किया, did somebody evaluated it, और आपने खुद से देखा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड आंसर कहीं ना कहीं देखा? देखिए, as you all know, I was already doing a job. I was in service candidate in that respect, so I had not that much of time to write answers and that get it evaluated, to wait for the evaluator to revert back and then improve my mistakes. So what worked for me, that I downloaded the toppers answer copies, rank 1, 2, 3, 4 of particular coaching centers, and then I studied a few copies, 5, 6 or 8 copies, and then I got the realization again that they had not written anything different. Whoever is in this preparation for 2 or 3 years, we all have got that knowledge, that basic knowledge and other things. But the way they interconnected the things, like if it was a question of GS1, there I got the elements from GS2, 3, and ethics as well. That is, they had included perspectives, different perspectives to that particular topic. So I got that those tips from those topper answer copies, and after that, what I did was that I would take a question only from that script, and I would write my own answer initially without any consideration of time. That is, there was no limitation of time initially. So I took for 10 minutes, I would for a question that would take 10 minutes to answer, I would take 15 or 20 minutes. And after that, I would compare my script, my answer with that of the topper. And then I would mark it where I needed to add something or any all those things. 2 points, yes. And it helped me. It helped me a lot. And after that, I went to stage 2 of answer writing, where I would take note of the time. So it worked for me in the examination hall as well. I was able to complete my question paper 5 minutes before the given time, and that worked for me. And every person has his or her own strategy, but this strategy worked for me, and maybe it would work for others as well. I think this is a standard SOP, like everybody will be saying that's the same thing. So the question now comes, how important is the knowledge and how important is memorizing few facts, concepts, like some lines, so that you can, in an examination center, like let's take an example, question is on role of women in digital India, or how far do you think that women are emerging as a good job creators? So in such question, how far do you think that some pointers related to society, some pointers related to women become handy in writing a good answer? Yes, it does. You have to give a well-balanced answer. Plus, I have seen some people, they focus a lot on diagrams and other things. Some focus a lot on statistics, on these studies, that study. And I think at the end of the day, it should be a balanced answer. You have to draw the diagrams wherever they are required in your answer script. And you have to give the statistics wherever it is required. You cannot fill up your answer sheet with statistics only, or with diagrams only, or with maps only. You have to write something. You have to explain your answer diagrammatically in some questions. You have to give statistics to back your answer or your opinion in some circumstances. But it's not like they will ask for it if you are giving a well-balanced answer, even if there is no statistics. Even if there are no maps or diagrams or other things, at the end of the day, what matters is your opinion on certain things. What are your opinions? But if there is a map, or there is a diagram, or there is a study that supports it, that is more beautiful. That makes your answer script more beautiful. But overall, I would suggest a well-balanced approach. It should be an amalgamation of everything, and you have to balance your answer. Okay, so you said like in GS4 we have to give more focus because it is something which we can increase the score. Yes. Efforts इसमें कम है, like उसमें output आपको ज़्यादा है. What was your strategy in GS4? Like the static wala portion, the conceptual wala portion, like we have attitude, we have emotional intelligence, then we have civil service norms, then we have bureaucracy के बारे में कुछ बताया गया है, even the moral thinkers के बारे में जो syllabus में दिया गया है.
So uske related, what was your approach? Like it's like same thing, you have mug up somewhere the attitude wala definition, and plus in the case study you have applied your knowledge or you have applied your analytical skill. I would say that you do not need to mug up anything in GS4. You just need to have an attitude, and plus you have to put yourself in different circumstances. The situations that are created in a particular day. For example, you board a bus and you are sitting on a seat and you see an elderly person or a woman standing there, and you have to ask yourself, what would I do in this situation? Because if we see there are these dilemmas and other things, you have to be honest with yourself. If you were in that situation, how would you act? There is no need to mug up anything. You have to just be yourself. They want to see a glimpse of you in ethics paper. They want ethically motivated people, and uh, GS4 is just a mirror of that you cannot make things up for GS4. You have to be real you have to answer the questions, and I think they in a way they catch you in GS4 paper. They you do not, for example, if they ask for honesty, what is honesty to you and what is integrity? No matter from where you mug up the answer, you can consult Wikipedia or other things, lexicon. You have to give your own definition. What is honesty to you? You have to ask yourself this question on a daily basis. What is honesty to me? You do not have to consult Wikipedia or other, because at the end of the day, the evaluators know where from the definition is. If you are making up your own definition, if you are giving them your own insights, that would be more effective in GS4. So just be honest in GS4. Tell them who you are. That's very very inciting information. So for the aspirants of 2023, so your message will be honest with yourself. Just if you are experiencing the day-to-day basis small issues in which dilemma is created, ask yourself what you would have been done. And in answer writing Yes, part, exactly. content enrichment, how important is that for new aspirants as well as for those who have been appearing in the mains examination for 2-3 years? Some very important topics that I worked separately on. Like for GS1, I had made a question bank of 10 questions. I knew that somewhere from these topics, questions would be asked. So I gave extra focus to these topics. I collected the statistics, the case studies. If this topic comes from, if question comes from this topic, so I would quote this case study. I would give this statistics and other things, and that really worked for me. I was focusing on certain areas. That was my code to crack this exam this time, and it certainly definitely worked. So how can the aspirant identify those areas? Like you have been in preparation for a long, you did it, but how can a new aspirant crack that code? Like understand those questions or themes which he or she finds, so these are recurring, these may come. I would suggest that they have to keep a check on whatever is going on around them. Like what are the hot topics? What is the situation in the world? Which geographical areas are in news? They are repeatedly in news. Which schemes are in news? Which states in India are in news right now? Like we have upcoming elections. How the preparation is being made? I would say that like the topic of elections, it would be trending this time in mains. So there are certain topics. If you are doing your daily current affairs, if you are studying the monthly magazine, you would get a hold of those topics. Okay, that's a wonderful insight about that thing. So what about Urdu optional? What should aspirants do in Urdu optional? वो लिखना कब से start करे या पढ़ना कब से start करे? कि उर्दू ऑप्शनल में एक बात है हमारे साथ कि जिनको उर्दू आती भी है, तो वी आर नॉट यूज टू राइटिंग इन उर्दू. सो अल्टीमेटली जो हमारी स्पीड है, उर्दू लिखने की स्पीड जो है वो कम है एज कम्पेयर टू अगर हम इंग्लिश लिखेंगे. तो इंग्लिश में जब हम लिखते हैं उसके लिए तो हम आंसर राइटिंग करते हैं. उर्दू में आपको पढ़ने से भी ज्यादा आपको फोकस करना है वेदर आई एम एबल टू कंप्लीट दी गिवन आंसर इन द पर्टिकुलर टाइम. क्योंकि उर्दू ऑप्शनल में जो बच्चे मेरे साथ लिख भी रहे थे, उनने पढ़ा भी था सारा, उनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट था, बट दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर पेपर इन दैट गिवन टाइम. उसमें मसला ये था कि उनको पता था कि इंग्लिश लिखने में हमारी स्पीड अच्छी है, लाइक GS1 2 3 4 उन्होंने अच्छे से कंप्लीट किए विद इन द गिवन टाइम. बट उर्दू में वो मिसकैलकुलेशन कर बैठते हैं कि उर्दू में भी इतना ही लिखना है,
तो we'd be able to complete it on time. उर्दू में बेसिकली यही है कि हम यूज तो नहीं है, तो उर्दू में आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा उर्दू आंसर राइटिंग पे। प्लस आपको ये देखना है कि 5 मिनट में या जो भी गिवन टाइम है मैं कर पा रहा हूँ कंप्लीट या नहीं कर पा रहा हूँ अपना आंसर स्क्रिप्ट। उसमें ये भी है कि आपको 3 घंटे का जो टाइम मिला है, आपको स्पीड पहले ही क्वेश्चन के पहले ही वर्ड से रखनी है। आपको पहले ही देखना है कि मुझे कंप्लीट करना है आंसर। ऐसा नहीं कि आप पहले एक आवर में सिर्फ एक क्वेश्चन लिख पा रहे हैं एंड देन आपको 4 क्वेश्चंस लिखने मैनेज करने हैं 2 घंटे में, वैसे नहीं चलेगा। आपको देखना है कि विद इन 35 मिनट्स और 33 मिनट्स आई हैव टू कंप्लीट दिस वन आंसर। तो उसके बाद आई हैव टू मूव टू अनदर क्वेश्चन। वैसे नहीं चलेगा कि आप 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस या 4.5 क्वेश्चंस लिखने के बाद एक्सपेक्ट करोगे कि आपका मीन्स निकल जाएगा। थिंग्स डू नॉट हैपन दैट वे। तो उर्दू में एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स आई वुड सजेस्ट कि आप आंसर राइटिंग, अगर आप बाकी ऑप्शनल्स में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं दिन में, उर्दू ऑप्शनल में आपको 3 क्वेश्चन लिखने ही पड़ेंगे। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उर्दू में ये है कि आपका जो भी रिकमेंडेड बुक लिस्ट है आपको वो पढ़नी ही पढ़नी है। देयर इज नो वे आउट। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि अगर पेपर में 6-7 पोइट्स उन्होंने दिए हैं तो मैं 5 पढ़ के निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपको सातों के साथ वो पढ़ने हैं। और उर्दू ऑप्शनल में दूसरा जो मुझे ये लगता है कि एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल सिलेबस काफी कम है। आई अग्री विद दिस थिंग कि उसमें सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है एज एन ऑप्शनल और उर्दू भी पढ़ा है एज एन ऑप्शनल। एज कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उर्दू ऑप्शनल का आपका जो सिलेबस है वो कम है। प्लस क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड। ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ जाता है उर्दू ऑप्शनल में। हाँ, अब लास्ट ईयर से थोड़े थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट थोड़े से एस्पायरेंट्स के लिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना है। बाकी यू डू नॉट नीड टू न्यू द ऑप्शन, जस्ट स्टडी इट वेल। जो भी आपके रिकमेंडेड ऑथर से रिकमेंडेड बुक्स है, यू जस्ट हैव टू स्टडी देम। प्लस आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। Like one or two more questions we can ask. Like one question is that plan B कितना important हो जाता है? Like how important is plan B during this preparation? जी, जब मैं ये क्वेश्चन पूछती थी तो मुझे ये बोला जाता था दैट बर्न ऑल योर बोट्स, बट आई वुड नॉट अग्री विद दैट थिंग। ये है कि आपको पता है कितनी अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, तो आई वुड सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ प्लान बी, बट प्लान बी ऐसा ना हो कि आपकी जर्नी को हर्डल करें। लाइक इफ यू आर इन अ जॉब, आप जॉब कर रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जॉब आपके लिए हर्डल ना बने। आप कैसे वो इंश्योर करेंगे? लाइक आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, तो जो मेरा जर्नी टाइम होता था 1 घंटे या 1.5 घंटे का, एवरी डे आई वुड यूटिलाइज इट इन समथिंग क्रिएटिव। लाइक जो मेरा करंट अफेयर्स होता था, करंट अफेयर्स वो यूट्यूब से मैं कंप्लीट करती थी, डेली करंट अफेयर्स वाला। तो वो मैंने जर्नी का टाइम उस चीज के लिए यूटिलाइज किया। मैं करंट अफेयर्स हेडफोन लगा के गाड़ी में वो सुन लेती थी, मेरा डेली करंट अफेयर्स हो जाता था। ऐसे जब आप जॉब के बाद वापस आए तो थोड़ा सा टाइम आपने, थोड़ा सा टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करें, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए आप, उसके बाद आप फिर से शुरू हो जाए। ये नहीं कि आप एग्जॉस्शन है, बाकी चीजें हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एग्जॉस्शन सबको होता है। बट फिर वही चीज आती है दैट आपने वो ख्वाब देखे है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कि एग्जॉस्शन है, आप ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। यू कैन सिप अ कॉफी और टू, और चाय आप पी सकते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करें खुद को एंड फिर से लग जाए वापस। लाइक आई वुड गिव यू एन एग्जांपल। जब मेरा जनवरी में रिजल्ट आया था एंड आई वाज श्योर कि आई वुड मेक द कट दिस टाइम, बट हुआ नहीं। फॉर्चुनेटली, आई वुड से फॉर्चुनेटली इट हैपेंड, क्योंकि फिर हमें लगता है कि चीजें अच्छे के लिए ही होती है। तो उसके बाद आई हैड गॉट ओनली 28 days टू अपीयर फॉर द मेंस। टाइम मेरे पास कम था। हाँ, टाइम मेरे पास बहुत कम था एंड आई हैड टू जॉइन माई ऑफिस बैक, क्योंकि मैं अर्न लीव पे गई थी इंटरव्यू देने के लिए, वॉज इन जम्मू। आई हैड टू जॉइन माई ऑफिस बैक। मुझे ऑफिस मैनेज करना था और मुझे अपना रिवीजन भी मैनेज करना था, प्लस करंट अफेयर्स जो नया था, क्योंकि करंट अफेयर्स मुझे नया पढ़ना था। आई वॉज नॉट इन टच फ्रॉम लास्ट 2 or 3 months जब से मेंस खत्म हुआ था। तो तब ये मोटिवेशन था कि नहीं, अब 4-5 या 6 मार्क्स से रह गया है, इस बार नहीं छोड़ना है।
सो आई मैनेज माई टाइम इन दैट वे। मैंने ये किया कि मैं ऑफिस के पास ही जो ये था वहां पे मैंने अकोमोडेशन ले लिया। मैं ऑफिस भी जाती थी, मैं वहां से आके अपना जो स्टडी है या रिवीजन टाइम है वो चीज भी ये करती थी। तो ऐसा नहीं है, इन एनी सर्कमस्टेंसेस यू डू नॉट हैव टू गिव अप। अगर मैंने तब गिव अप किया होता तो आई डू नॉट थिंक आई वुड बी हियर टॉकिंग टू यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया फिर। तो ये मसला है कि गिव अप, आप गिव अप करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम ये के बाद ऐसी बिल्कुल, जर्नी हाँ। है, ये ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप वापस भी नहीं जा सकते एक टाइम के बाद। इसमें फिर ये होता है बस या तो अटेम्प्ट्स खत्म हो, वरना छोड़ी नहीं जाती ये चीज आपसे। ये मसला है इसमें। तो बेटर ये है कि अगर आप पहले ही मोटिवेटेड है दैट आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो हर एक इंसान की वैरी होती है। व्हाट वर्क्स फॉर मी वुड नॉट वर्क फॉर एनी अदर अदर पर्सन। लाइक पर्सन। आई वुड स्टे अप, हाँ आई वुड स्टे अप till 3 or 3:30 in the morning, but I cannot wake up early in the morning. तो कुछ लोगों का ये होता है कि वो 3 बजे सुबह के उठ जाते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए वो वर्क करता है, और कुछ लोगों के लिए ये वर्क करता है कि वो लेट नाइट स्टडीज कर सकते हैं। एंड बोथ दीज थिंग्स वर्क। किसी के लिए एक चीज वर्क करती है, किसी के लिए कोई और चीज वर्क करती है, एंड दोनों परफेक्टली ओके है। तो आपके लिए जो वर्क करता है आप वो फॉलो करें। ये नहीं कि आप कोई दूसरा आपका फ्रेंड सुबह उठ के पढ़ रहा है तो आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं भी आज से सुबह उठ के पढ़ूंगा। मैंने ट्राई किया, मैं नहीं कर पाई, नहीं हो पाता है इंसान से। तो जो आपका टाइम टेबल है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं, तो आप उस टाइम में जो भी मतलब हमारे कुछ आवर्स होते हैं दिन के, या जो भी हमारी 24 आवर्स जहाँ पे हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, तो यू हैव टू फाइंड दोज आवर्स, क्योंकि उसमें आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा आएगा। तो वो चीजें आपको देखनी है, आपको खुद को एनालाइज करना है सबसे पहले। ये आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगा आगे। बिल्कुल आपने बात की, यू टॉक अबाउट दैट यूरोका मोमेंट इन अ डे व्हेन यू विल फील वेरी गुड। बट अगेन वो उसी के लिए शायद आएगा जो रूम में होगा, किताबों पे होगा। यूरोका मोमेंट विल नॉट कम व्हेन यू जी आर इन द ग्राउंड, व्हेन यू आर इन अ वेडिंग पार्टी, नो right? नो 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 So नो नो yeah, so यस। my question is now, is the length of the hours you study in a day important or the productivity is important? तो प्रिपरेशन में बहुत सारे जी बच्चे बोले 10-10 प्रोडक्टिविटी घंटा पढ़ना ही इम्पोर्टेंट। पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट देयर इज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम टू इट। लाइक आप ये बोलते हैं कि मैं 24 आवर्स में 18 आवर्स पढ़ता हूँ, दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आप पढ़ पाएंगे एक दिन दो दिन, बट उसके बाद ये होता है कि फिर 3 4 दिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द मैक्सिमम। एंड मिनिमम ये है कि कोई बोल रहा है मैं 2 घंटे दिन में पढ़ता हूँ एंड आई विल क्वालिफाई इट, वो भी नहीं होगा। देयर इज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम टू इट। आपको मिनिमम 5 से 6 घंटे देने ही पड़ेंगे। एंड उसके बाद आपका आउटपुट डिपेंड करेगा कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं उन 4 5 घंटों में। किसी के लिए ये होता है, लाइक मेरे लिए ये था कि मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगी, फिर 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर से 30 मिनट्स। किसी के लिए ये होता है कि वो 4 घंटे या 5 घंटे बैठ के अच्छे से फोकस करके पढ़ते हैं। और किसी किसी का ये होता है कि अभी 2 घंटे पढ़े, फिर 2 3 घंटे मस्ती वस्ती की, फिर 2 घंटे फिर से पढ़ लिए। तो वॉट एवर सूट्स यू, मिनिमम आपको 5 घंटे देने ही देने हैं। और आप कोशिश ना करें कि मैं पहले दिन 18 आवर्स पढ़ूंगा, दूसरे दिन फिर ये। कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आप एक दिन 5 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, दैट इज मच बेटर देन आप एक दिन 18 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन कुछ भी नहीं। तो यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट। आपको देखना है कि मैं कितना दे सकता हूँ इसमें। लाइक जब मुझे ये लग रहा था कभी कभी कि आज दिन मैं कुछ नहीं कर पाई उतना, मैंने 1 1.5 घंटा पढ़ा, उसके बाद मुझे कभी लगता था कि आज मैंने 5 8 घंटे पढ़े। फिर मैंने एक रूटीन बनाया अपने लिए कि मैंने सुबह ही जब मैं मतलब बुक्स खोलती थी, मैं डिसाइड करती थी कि आज शाम को मतलब जब मैं बुक्स बंद करूंगी जितने भी बजे, या एट द एंड ऑफ द डे, मैं कैलकुलेट करूंगी कि मैंने कितने घंटे पढ़ा। ठीक है, मैंने वो लिख लिया एक दिन। उसके बाद सेकेंड डे मैंने, थर्ड डे मैंने कितने घंटे पढ़ा। तो कीप चेक ऑन दैट थिंग। इसलिए नहीं कि आपको इससे ये होगा कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए कि आपका जो मिनिमम है 5 आवर्स उससे कम ना रहे। मिनिमम इज 5 आवर्स, मैक्सिमम आप ज्यादा नहीं कर सकते, 5 6 7 घंटे। अब अगर आप जॉब में नहीं है, आप घर पे रहते हैं पूरा दिन, फिर ये नहीं है कि 5 6 घंटे पढ़ो। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में किस स्टेज पे है।
लाइक जैसे very मैंने आपको important. बोला कि उन 28 डेज में मैंने जो रिवीजन था मेरा और करंट अफेयर वो मैंने कर लिया। वो मैं 3-4 घंटे बैठ के वो मैंने मतलब हर दिन 3-4 घंटे बैठ के वो मैंने कर लिया। बट अगर मेरा पहला या सेकेंड अटेम्प्ट होता तो 3-4 घंटे से कुछ नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल. एग्जाम्स बिल्कुल ही ज्यादा नजदीक थे। तो आपके स्टडिंग आवर्स बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। पहले ये कि आप किस स्टेज पे है प्रिपरेशन के, सेकेंड ये स्टेज है कि आपका एग्जाम कितना दूर है, तीसरा ये फैक्टर भी आता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका आउटपुट है वो कैसा है। तो आपको क्या करना है, बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप अपने स्टडिंग आवर्स में से आपको बाकी चीजों के लिए टाइम निकालना पड़े तो आपका शेड्यूल जो है, टाइम टेबल है वो ठीक ठाक है। लेकिन जब आपको आपके शेड्यूल में से पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़े तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे फिर। तो बस ये आप याद रखें तो आपको पता चलेगा कि दैट आई एम ऑन ट्रैक। लास्ट क्वेश्चन उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2023 का एग्जाम दे रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली बाय Feb 20, तो दे हैव नाउ लाइक लेट्स अज्यूम 3 months, तो 3 months में उनको क्या करना चाहिए? I would say focus on answer writing. I would emphasize this thing a million times अगर मेरे लिमिट्स में होता। Just focus on answer writing. ये नहीं है कि आपको वहां पे वाइवा में कुछ बोलना है, या उनको जो इवेलुएटर है उनको कैसे पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या है, आपके पास कितनी नॉलेज है। दे विल गेट इट ओनली विद बाय द मीन्स ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट। तो जो आप आंसर शीट में लिख के आते हैं, दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है दैट वुड बी बाय योर आंसर राइटिंग ओनली। सो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फ्रॉम नाउ, फ्रॉम दिस डे ओनली। एंड ये है कि आप आंसर राइटिंग में कम से कम 2 घंटे दें। आप ऑप्शनल के 2 क्वेश्चंस लिखे, आप जीएस का जो है जीएस के कम से कम 2 क्वेश्चंस लिखे। उसके बाद अगर आप 4 क्वेश्चंस लिख पा रहे हैं, उसके बाद आप टाइम नोट करें, प्लस आप इवेलुएट करें अपने आंसर्स को कि कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है। एंड फिर आप एक फोल्डर बनाए अपने आंसर स्क्रिप्ट्स का, और फिर देखते रहे कि कहाँ कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है, उसको रेड पेन से मार्क करें या मार्कर से मार्क करें आप अच्छे से। फिर आप वर्क करें, जो भी गलतियां हो रही है आपसे उन पे वर्क करें। जो भी आपको लगता है कि मैंने ये कोड नहीं किया, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, तो वो आप देखिए अच्छे से। प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पेपर्स है वो आप अपने पास रखें, फोकस ऑन देम। प्लस जो मैंने आपको बोला कि कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन पे एक्स्ट्रा काम करें। आपको ज्यादा फोकस करना है उन चीजों पे। तो वो ये स्ट्रेटेजी मेरी थी। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपके लिए वर्क करती है तो यू शुड यूज देम एज वेल, एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am, for talking to UPSC Essential Simplified. It was a pleasure talking थैंक to यू। you. Thank you very much.